sovereign guarantee. We added 50,000 crore more sovereign guarantee and wanted the hospitality and contact intensive sectors to benefit out of it. So that is the scheme. As it is, many of them are still approaching their banks. Banks can, even without the ECGLS, help them out if they want. But if ECGLS has to be extended, yes, we have given provision of 50,000 crores for it. Well, I thought you commented about the 1st February 2021 budget as well, saying you were conservative. I think our assessments have proven right, and conservative is not being overtly and excessively optimistic. We are sure to achieve the numbers. If anything, we'll probably better them. Number 5. Good afternoon, Madam Finance Minister. This is Karishma here from Business Today TV, India Today Group. I'd first like to congratulate you and the team for successfully implementing yet another budget. Ma'am, my question is on the privatization reform. The disinvestment target has been slashed. The revised target is at 78,000 crore, and of course, the next year's estimate is at 65,000 crore. Ma'am, with this, I'd like to understand how are we looking at LIC, IPO and BPCL privatization, which have been on cards? I have Tuhin with me here, but before he gives you details, one thing is got to be understood. LIC, we've already sort of told you that in all probability it is going through this year. I've made a specific mention of that in the budget. So beyond what I've said in the parliament, there's nothing more to add for me on that. But I've indicated clearly that it will happen. Now, assessment for the rest of the year about the number being big or small as per your view, I'll have Tuhin get into the details. But we have shown the intent of the government in that Air India got cleared. NINL has found its buyer. There's a little bit more work to be done there, but you are saying that we are progressing in many of these. So I think we've been very realistic in telling what we'll do and achieving what we've told. Tuhin, you want to add anything more onto this? I'll just want to add that disinvestment actually is in accounting terms, when actual receipts to the government. Now, when we, for example, do NINL, nothing comes to the government in accounting terms. But that doesn't mean that we are actually progressing towards privatization in a faster way. So emphasis is on completion of transactions and implementation. And if we keep too high a target, sometimes it also distorts the market. Because nothing stops us from achieving when we want to achieve in disinvestment as per the plan which we are there. So ma'am has also mentioned that the ongoing transactions will be carried on and they will be completed. And this transactions, as and when they mature, they come to that. And secondly, on the revised estimates being 78, we should not also conjecture what will be the size of LIC IPO based on that, because valuation is yet to reach the final conclusion based on which we will do that. And there have been instances of actual receipts being different from even the RE figures, so we should not read too much into it. Okay. 122. Hi ma'am, Meghna Mittal from Newsrise. The budget has remained completely silent on India's listing on the foreign indices. There was an expectation that a tax amendment might happen to enable that. Has that been put on hold, or what is the plan on that? Just repeat your question. I think your voice was a bit muffled. Ma'am, I'm Meghna Mittal from Newsrise. My question is that the budget has remained silent on India's listing on the foreign indices. The expectation was of a tax amendment to enable that. So has that plan been put on hold, or what is the update on that? You're referring to the bond indices, Yes, right? yes. The issue is that the
NR to NR transactions are anyway tax-free. So there's no capital gains. The issue was between NR and resident. So the BEPS discussions are on for us. And in those discussions, we are actually saying that the capital gains tax right should come to the country where the transactions emanate from. So that has been our stand. And those discussions are still on, and we are the one who's propounding that thing, and that's how it is moving, those discussions. So this was not the right time for us to take a decision in a manner where we give up on our own domestic thing while we keep fighting in the BEPS discussions. So that was the basic reason that we didn't want to do it this year. Number 90. Ma'am, firstly, congratulations. Just two quick clarifications. One is on cryptocurrency, because you did touch about the RBI now giving digital rupee, and it will start from next year. And you've reflected that in the finance bill. You've also taxed cryptocurrency, but there's no regulation. So how are you going to work on that? I'm a little bit keen to understand that. And the other issue, of course, is that in your speech, which was very well put, there was one key issue which affects all of us, including you, inflation. How are you going to deal with that? First thing, Sunil, I said the Reserve Bank will be issuing a digital currency. Currency becomes all. A currency is a currency only when it is issued by the central bank, even if it's a crypto. By anything which is outside of that, loosely all of us refer it to the cryptocurrency, they are not currencies. So let's first understand we are not taxing currency that is yet to be issued, and that provision is now made, and a currency in the name of digital rupee will be issued. Exact name you'll get a bit later, but Reserve Bank is the one which is going to issue it. And what Reserve Bank issues is the digital currency. Everything that prevails outside of it in the name of digital, whatever, are assets being created by individuals. And in transacting that asset, if there are profits being made, we are taxing that profit at 30%. We are also tracking every trail of money in that by saying every transaction will be 1% TDS, if I can use that expression. There will be a transaction, TDS imposed on every transaction in the crypto world, any transaction that is happening outside. So the distinctions are very clear. Currency is only with the Reserve Bank. That will get issued sometime this year. The transaction happening in the crypto world are of different kinds of assets, and for that, every transaction gets taxed. So we have circulated a paper, inputs are coming in, public stakeholders are also talking about it, so regulation goes through that process. I don't wait till regulation comes into place for taxing people who are earning profits, can I? Well, every budget doesn't speak explicitly about inflation and its impact, but of course if you're talking of numbers, money, credit, liquidity, and also supply and demand of essential goods and others, you keep in mind inflation. Okay. 11. मैम, मैं आमिर हूं न्यूज नेशन से। बहुत सारी चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि जिस तरह से इनकम टैक्स को लेकर के उम्मीद की जा रही थी काफी समय से, तो इस बार इनकम टैक्स को बढ़ाने का टैक्स तो टैक्स को कम नहीं किया गया, कॉर्पोरेट को के टैक्स को कम किया गया। बढ़ाने का उम्मीद है तो मैं बढ़ा नहीं दिया मैंने। लेकिन ऐसा मैम ऐसा क्या हुआ कि टैक्स में कोई भी रिबेट नहीं मिली? आम जनता जो पब्लिक खासतौर पे सैलरीड क्लास है उसको बहुत उम्मीदें थी इस बार बजट से। मैंने टैक्स इंक्रीज नहीं किया, वो बात मैं दोहराना चाहती हूं। लास्ट ईयर भी, इस साल भी, एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय
जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं। वही इंस्ट्रक्शन इस बार भी, इसीलिए हमने टैक्स के द्वारा कोई पैसा कमा करके पैंडेमिक के समय जो डिमांड्स एंड चैलेंजेस है हमारे ऊपर, उसको कोई उससे राहत ढूंढने का अटेम्प्ट भी नहीं किया। टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ। 1 to 4. Hello. Good evening, ma'am. Shishir. Yes, Shishir. Ma'am, there is a one particular announcement which you made about the blended and non-blended petrol and diesel, that additional or the differential 2 rupees thing. Does this mean that all the petrol and diesel sold by petrol pump except those who are not blended from October 1, 2022 will be costlier? We certainly want to encourage blended fuel. That's a simple message in that. Anything else you want to add, Tarun? We have discussed with the Ministry of Petroleum. We have also collected data on what is not being blended, and this is something to push the petroleum companies to ensure that they do the blending. So our desire is not to collect this tax because it will be very minimal, but the desire is that the blending happens, and to that extent it benefits the country. 106. मंत्री जी, हमारा आपसे मैं एसएम आसिफ, इन दिनों से मेरा सवाल है कि आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि 80 लाख लोगों को मकान दिया जाएगा और रोजगार बढ़ाया जाएगा। ये किस तरीके से? ये किस तरीके से? आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इस साल 5.5 लाख करोड़ का खर्च हम उठा रहे हैं, वो 34% या उसे थोड़ा कम पिछले साल से कंपेयर करते हुए, और इस साल आने वाले साल के लिए जो बजट आज पेश किए उसमें 5.5 लाख करोड़ 7.5 लाख करोड़ तक पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बढ़ावा दे रहे हैं उतना अमाउंट तक। उससे तुरंत जॉब्स के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि जब खर्च उठा रहे हैं हम एसेट क्रिएशन के लिए, रोड्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, सी पोर्ट्स के लिए, इनलैंड वाटरवेज के लिए, ये सब काम करने के लिए जो रोजगार पैदा होता है, आवश्यक है, उससे जॉब्स इंक्रीज ही होगा। उसके अलावा हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स 14 सेक्टर्स में दे रहे हैं। मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए हर एक नया यूनिट जो वो उत्पादन करेंगे उसके लिए इंसेंटिव देने के कारण, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि ये मैन्युफैक्चर बढ़ाने के समय जॉब्स भी बढ़ाते हैं। तो पीएलआई के पीछे ये भी हमारा मकसद है कि जॉब्स इंक्रीज होगा, इसीलिए पीएलआई देना है। वो सेकेंड बात है। तीसरी, अभी 60,000 crores have been added ये जो अभी सॉवरेन गारंटी के साथ हमने दे रहे हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का, और ECGLS जो दिए पिछले साल MSMEs के लिए, उससे ऑलरेडी एक बाहर की इंडिपेंडेंट स्टडी, सरकार का नहीं, इंडिपेंडेंट स्टडी से ये डेटा आ रहे हैं कि MSME सेक्टर उस लोन को उपयोग करते हुए उनके पास काम करने वाले सबको उनके जॉब्स में बरकरार रखे, वो उन जॉब से हटाया नहीं गया। सो सरकार के प्लान हर एक ऐसे जो प्लान्स पैंडेमिक के समय दिया गया आत्मनिर्भर भारत के नाम पर, और उसके बाद ये ECGLS, अभी जो ECGLS हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए हम दे रहे हैं, वो सब जॉब्स को मन में रखते हुए ही दे रहे हैं। ये तरीका। 175. Ma'am, Tarun Sharma from Z Business.
मैम आपने बजट में 2 अनाउंसमेंट्स करी हैं, एक आईबीसी अमेंडमेंट्स को लेकर। मैम किस तरीके के अमेंडमेंट्स आप देख रही हैं आईबीसी के अंदर जिससे रेजोल्यूशन प्रोसेस जल्दी हो पाए? और दूसरा मैम आपने कहा एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए। मैम किस तरीके के कंसर्न्स उन्होंने आपके सामने रेज किए हैं? क्योंकि आपने लिखा है कि रेगुलेटर आर्बिट्राज या फ्रिक्शन जो है उसको दूर किया जाए, तो क्या कंसर्न्स प्राइवेट इक्विटी प्लेयर और वेंचर कैपिटलिस्ट के? No, there could be any number of concerns, but once when they met me and once when they met the Honorable Prime Minister, they went into a lot of details which are important from the point of view of ease of doing business and also better understanding that sector. If all of us can see the point that private equity in India venture capital funds have been one of the prime reasons why many of the startups could raise to become unicorns within first 6 months of this year itself. Last year, 21 itself, you saw how many of them benefited by funds being made available in India through private equity. Now, if that sector needs further facilitation, obviously the sector will have to sit and talk with a group of people who can understand their needs and then suggest solution for policy making. That is why I have referred to the consultation which we've had with them and then said that we will appoint a committee which will go through it and come back to the government with suggestions. 255. Ma'am Janeshwar Dayal from Jan Express. I have a question, actually 2 questions. When can we expect the farmers' income to double? Number 1. And When number can we expect the pharmaceutical? farmers' income to double? It was supposed to double in 2022. And how far is the goal of 5 trillion economy? And in what way your budget would take us there? Thank you. Who wants to? I mean, will Ananta Nageshwaran want to answer it? So if you look at the amount of minimum support prices that was given out this year and also the record procurement, so we are well on our way to helping the Is your farmers. mic all right? Or do you want to, the voice is not coming out. So if you look at the amount of minimum support prices that have been handed out to farmers in terms of the food grains procured from them, as well as the quantity of food grains procured from farmers, it does suggest very strongly that we are well on the way to helping farmers substantially improve their income. Those statistics are given in Madam's speech document as well. As far as the $5 trillion economy size is concerned, if you look at the fact that in the year ending 21-22 as well as in the next financial year, we are the fastest growing economy among large economies, and our GDP in dollar terms has already crossed $3 trillion. So depending on how the exchange rate moves, and there is enough hope to believe that the Indian rupee will in fact remain stable to strong given what is going on in the developed world. And if we continue to retain the path of 8% real GDP growth, it will translate into even 8% dollar GDP growth. So therefore, if you extrapolate it, in the financial year 25-26 or by 26-27, with some luck even by 25-26 itself, we should be at the $5 trillion size in terms of nominal GDP. Thank you. मैं उसमें जोड़ना चाहती हूँ. Sorry, I didn't get your name. ज्ञानेश्वर जी, एक आध विषय मैं जोड़ना चाहती हूँ उसमें. I'll just list out the things, you'll understand where I'm coming from. MSP, यूरिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैं एक सिर्फ यूरिया सब्सिडी का नंबर बोलती हूं. बजट 21-22, मतलब 1 फरवरी 21 में जो बजट दिया गया उसमें 58,768 was the allocation for urea subsidy. This time it is 63,222 आने वाले साल के लिए. ठीक है.
और एक्चुअली 58,768 जो बीई में बोला गया यूरिया सब्सिडी, वो आरई में 75,930। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल यूरिया प्राइसेस जितने भी इंक्रीज नहीं हुए, इट्स ऑल राइट, इट गॉट इंक्रीज्ड, मगर वो बोझ किसान के ऊपर पड़ने नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने उसको तुरंत इंटरवीन करके that burden we took, we didn't put it on the farmer. So MSP, urea, nutrient in terms of micronutrients which we are giving for farmers, 6,000 rupees Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, additional income कमाने के लिए किसान के लिए शहद का कल्टीवेशन, हनी, बी कीपिंग का प्रावधान, उसको समर्थन और उसका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ऑल काइंड्स ऑफ मार्केट लिंकेजेस थ्रू ई कॉमर्स, फिर सोलर पंप्स, उनके वाटर पंपिंग के लिए किसान के लिए सोलर पैनल वगैरह दिया गया है, जिससे उनका ऊर्जा का एक्सपेंस कम होगा। फिर मैंने शायद जुलाई 19 के बजट में या 20 के बजट में ये बात बोली, अन्नदाता क्यों ऊर्जा दाता नहीं बन पाएंगे, जरूर बन पाएंगे। वी मेड श्योर दैट एवरी किसान विल प्रोड्यूस बिजली यूजिंग सोलर पैनल्स इन हिज फील्ड, and he can also uplink that and earn money from the government for supplying urja. Finally, in this budget, I have also made an announcement for food processing, which is at the farm gate, so that investments can happen there. Post-harvest grains को तुरंत प्रोसेसिंग में वो किसान देने के कारण उनका इनकम बेटर रेट्स मिलता है उनको. So there are several steps that we are taking for improving farmers' income. I want you to please take cognizance of it. इसके अलावा एग्रीकल्चर क्रेडिट वो भी इम्पोर्टेंट है. इस साल टारगेट 16.5 लाख करोड़ का था, जो अभी तक 75% हो गया है. अगर आप देखेंगे आज से 16-17 में वो 10,65,000 करोड़ था, तो ये बढ़कर अब 16,50,000 करोड़ इस साल होगा. अगले साल हमारा लक्ष्य है इसको 18 लाख करोड़ तक पहुंचाने के लिए. तो एग्रीकल्चर क्रेडिट में भी काफी बढ़ोतरी हुई. Okay, 125. Ma'am, Timsi Jaipuria this side from CNBC TV 18. Your tax revenue collection targets are conservative, but your borrowing numbers are all-time high. How do you explain that? And secondly, when it comes to public sector expenditure, the capex expenditure for RE 2022, they have been revised downwards. How do you explain growth along with these downward revisions? First, on the, you are saying that the capital expenditure targets for the RE have been moved downwards. From how much to how much, according to you? Okay. No, not in the capital expenditure budget estimate was 5,54,000 crores. The revised estimate, after removing the actual revised estimate is 6,03,000 crores, but even if you exclude 52,000 crores, which is an Air India sundry dues repayment, it is 551. So the RE is 551 against a budget estimate of 554. That is statistically insignificant. So basically the capital expenditure targets are expected to be achieved. I think this question was also asked by your colleague Sapna here, that the revenues are conservative. So if we look at revenues and compare it with the GDP figures, I would also like you to concentrate on the fact that the excise duty is not linked to that. Excise duty is a specific duty, so that doesn't go up as the prices would go up. One, and secondly, if you recall, we have reduced the excise duty on diesel and petrol by 10 rupees and 5 rupees per litre. So if we take away the excise duty numbers both from the RE of the current year and the B of the next year, then the growth in the revenues is more than 14%, which I think is not conservative, but is a very pragmatic number, and we would make all attempts to achieve that.
Number 70, number 70, number 70. No, the borrowing number is nothing but the fiscal deficit minus the expected small savings collections and the other sources. So they tally. I mean, it is 16 lakh 61 is the total fiscal deficit. 11 lakh 80 or something is the net borrowing requirement. The difference is small savings and certain other sundry receipts. I don't see any, there is no artificial, that's a very realistic number. It's based on our best estimate of what will be collected in small savings, and net of that is the borrowing requirement. Ujjwal Narayan from Newsrise. Ma'am, in last year budget, you have announced about privatization of two state-run banks. But this year, there is nothing that sort has been confirmed in the budget. Just wanted to know what is the situation. Does government is going with the stated policy which it stated in last year budget, that for the privatization of two state-run banks, and what is the holistic policy on the privatization of bank and insurance company as a whole? You've answered the question yourself. What is the holistic policy? Holistic policy is a continuation of last year's budget. I've said that. This budget in every aspect is a continuation of last budget, inclusive of the privatization matter that you're talking about. That's what I'm telling you. We are continuing that agenda. All right? Number 68. Status budget. Sorry? Yeah, I said Air India also, and I've done the Air India, haven't I? Huh? That's right. When we have something, you'll get to know, no? I'm not doubting it. Huh? That's right. Thanks for reminding me. Number 68. क्या चीज? डिजिटल एसेट क्या है? क्या इसमें क्रिप्टो, जिसको करेंसी भी कहा जाता है, क्रिप्टो करेंसी, तो जिसके लिए घोषणा की गई है आज बजट में? घोषणा की गई है कि सेंट्रल बैंक एक डिजिटल करेंसी इश्यू करेगी, बस। उसके अलावा हम चर्चा में क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो एसेट क्या है, अभी नहीं होगा। वो जीरो ड्राफ्ट जो है, जिसके ऊपर स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन चल रही है, आप भी उसमें शामिल हो जाइए। नहीं मैम, मैं ये जानना चाहता हूं कि डिजिटल एसेट क्या है बेसिकली। ठीक है, वही है वो प्रश्न, और डिजिटल एसेट्स का डिस्क्रिप्शन, ये सब उस स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद है, उस समय बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, 1 to 1. के सवाल है। एक तो लोग महंगाई से बहुत त्रस्त हैं, आपने जवाब दिया गोलमोल, लोगों को समझ में नहीं आया। सॉरी, जो महंगाई पे सवाल पूछा गया था, शायद प्रभु जी ने पूछा था, हाँ जी, कि देश में इतनी महंगाई है, उसका आपने बहुत ही डिफिकल्ट आंसर दिया। शायद आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। मेरे पास किसी का प्रश्न आया कि समझ में नहीं आया मैडम ने महंगाई पे क्या बोला। दूसरा मेरा प्रश्न मैडम बेरोजगारी के ऊपर है। आपने कहा लाखों रोजगार सृजित होंगे। सरकार का वादा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ और घट गए बजाय रोजगार देने के, और बेरोजगारी ज्यादा हो गई। और जो एक छोटा सा मैडम आपका एक इशू था, शुरू से चला आ रहा है पार्टी का, कि ब्लैक मनी वापस लाएंगे। कोई ऐसा डेटा है कितना ब्लैक मनी वापस आया आज तक? इन्फ्लेशन के बारे में जो मैंने जवाब दिया, वो जवाब मैं दोहराऊंगी, मगर वो अगर आपको गोलमोल लग रही है, मैं किसी और से जवाब दूंगी, क्योंकि मेरा बोलने का तरीका शायद आपको हिंदी में और इंग्लिश में दिक्कत है। I'll ask somebody else to answer it. There is no गोलमोल, सर। बजट जब प्लान करते हैं
और एसेंशियल सर्विसेज का एक कमेटी जो है मंत्रीगण का, ये बार बार हम बैठते हैं, बात करते हैं। हाँ, जब इंक्रीज होता है प्राइस एसेंशियल कमोडिटीज का, मैं मानती हूं आम आदमी के ऊपर उसका दिक्कत जरूर पड़ेगा, उसको मैं नकार नहीं रही हूं। मगर ऑयल सीड्स, ऑयल, एडिबल ऑयल का प्रॉब्लम जब हुआ, तुरंत हमने ड्यूटी कम करते हुए पाम ऑयल का इंपोर्ट बढ़ाने के लिए एक बार नहीं 2 बार कोशिश की, और पाम ऑयल का इंपोर्ट, क्रूड पाम ऑयल का इंपोर्ट और रिफाइंड भी ज्यादा आ रही है, जिसका असर आजकल एडिबल ऑयल में जरूर पड़ रही है और मार्केट में खबर भी है। इन्फ्लेशन दूसरा एक और विषय, एडिबल पेरिशेबल कमोडिटीज के ऊपर जब होता है, उसको भी इंपोर्ट के द्वारा तुरंत हेल्प करने के लिए हम स्टेप्स उठाते हैं। फिर ऑयल सीड्स भारत देश में भी कल्टीवेट हो, उसका उत्पादन ज्यादा होने के कारण हम आत्मनिर्भर हो एडिबल ऑयल में, उसका भी इस बजट में एक अनाउंसमेंट हुआ है। ऐसे करके बहुत सारे कदम हम उठा रहे हैं। एक और विषय, सिंपल टेक्निकल बात मैं जिक्र करना चाहती हूं। हां, जरूर जनता के ऊपर प्राइसेस के वजह से जब ट्रबल होता है, उसमें एक्शन लेने का जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है और हम बार बार उसके ऊपर कदम उठाते आ रहे हैं। मगर टेक्निकली 6% से ज्यादा कभी ब्रीच ही नहीं, छोटा इधर उधर एक महीना हुआ होगा 6% ब्रीच करने का इन्फ्लेशन का विषय में। मैं याद दिलाना चाहती हूं कि सरकार 2014 से लेकर आज तक वी हैव नॉट अलाउड इट टू गो टू डबल डिजिट्स। जो याद होगा आपको, उससे पहले 2014 से पहले it was always in the range of 10, 11, 12, 13, even food products. इसलिए इन्फ्लेशन के ऊपर इस सरकार की ध्यान कभी भी ज्यादा है और एक्शंस भी तुरंत हम लेते हैं। अगर ये भी आपको गोलमोल लगता है, मैं किसी और से भी जवाब देने के लिए बोलूंगी। ठीक है, बोलिए, चूज करिए किसी के। एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं जरूर बोलूंगी। बहुत सारे, मैं भाई साहब, पैंडेमिक के वजह से पूरे दुनिया में बहुत उथल पुथल हुआ, जॉब्स में नुकसान हुआ बहुत देशों में, हमारे यहां भी। मगर हमने आत्मनिर्भर भारत के दौरान बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट किया जिसमें बहुत लोगों के जॉब्स इंटैक्ट रही। हां, जिनको नुकसान हुआ उनको अभी हम धीरे धीरे बहुत स्कीम्स के द्वारा हेल्प करके आ रहे हैं। ये नहीं नकार, आई मीन आई एम नॉट डिनाइंग दैट देयर हैज बीन इम्पैक्ट ऑन जॉब्स, मगर एकदम कुछ नहीं किया वो सही भी नहीं है। कल का इकोनॉमिक सर्वे में अनंत नागेश्वरन जी और हमारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर, आई थिंक इज हियर, संजीव सन्याल, इतना विस्तृत रूप में जॉब्स के लिए क्या क्या पिछले साल में हुआ वो डिटेल दिए हैं। मैं संजीव से बोलूंगी आपको जरा इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। हाँ, सो इट विल हेल्प यू टू नो। थैंक यू। Number 260. Somanathan wants to. Okay. Yes. Just specifically on job. Yeah, but specifically on jobs and specifically what is in the budget. So one is there is an additional 2 lakh crores of lending to MSMEs which is outside the ECLGS. So ECLGS is for those affected. It's an automatic program for existing borrowers. This is for new lending to MSMEs unconnected with ECLGS. 2 lakh crore of additional provision has been made in this budget. ECLGS has, as already mentioned, been expanded for the hospitality and related sectors. The outlay on Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is up by 27%. And in addition to that, a provision is being made that in the capital expenditure support to state governments, if state governments have certain priority projects in PM Gram Sadak Yojana have been identified, we will even take the 40% state share on those components so that the states have no burden in carrying out these works. These are extremely labor-intensive projects, and in addition, of course, there is a huge increase in capital expenditure. It has a very high employment effect.
We have a new scheme for the Northeast, which is abbreviated as PM Divine, which is the PM's development initiative for the Northeast. This is a gap-filling scheme where if something doesn't fit in any existing scheme, Northeastern states can post those projects to this fund, and this fund will give 100% funding for those projects. In addition, we have the production-linked incentive schemes where we expect 60 lakh jobs to be created. Most of them are getting rolled out now one by one. So there are a number of initiatives in this budget, quite apart from what has been done earlier. हम बार बार देते आ रहे हैं. Actually, sharing of information विदेश से, स्विट्जरलैंड से 2018 के बाद में से शेयरिंग हो रही है. विदेश में जो अकाउंट्स है उनमें कितना पैसा पड़ा हुआ है उनको वापस ले आने के लिए. सो वो शेयरिंग के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन आते हैं उसके ऊपर वी आर वर्किंग एवरी अकाउंट बाय अकाउंट फॉर ब्लैक मनी टू बी ब्रॉट. एंड अनदर थिंग, टुडे द एनपीएस इन द बैंक्स आर कमिंग डाउन. Banks are getting the money back of those who have fled the country. Having taken the money of the banks and having gone out, वो पैसा जब वापस आ रही है वो भी in a way partly black money ही होता है जी, जिसका टैक्स नहीं भरा, बैंक को पैसा चीट करके चले गए. मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरे के पूरे वो ब्लैक है, उसमें भी ब्लैक मनी है. 260. मैम आनंद हूँ इंडिया टीवी से. हाँ मैम, आपके लिए भी उधर से बहुत वैसे सवाल आ रहे थे. अपोजिशन ने ये कहा है कि जो आपका जो आज बजट है वो डायरेक्शनलेस है और इसमें सिर्फ भविष्य की बात की गई है, तात्कालिक राहत के लिए कुछ नहीं है. और राहुल गांधी ने तो इसे कह दिया जीरो सम बजट कहा है. उन्होंने कहा है कि इसमें सैलरीड क्लास के लिए, मिडिल क्लास, गरीब, युवा, किसान, एमएसएमई के लिए कुछ भी नहीं है. तो सवाल ये है कि क्या विपक्ष को और खासतौर से राहुल गांधी को आपका ये बजट समझ में नहीं आया या फिर उन्होंने राजनीति के चलते ऐसा कह रहे हैं वो लोग?